स्वागत करुच्ची नवज्योति एजुकेयर आउ गोटे वीडियो आरंभ करने पूर्व कही रखिए चैनल को नुआ कर निश्चित चैनल सब्सक्राइब करूँ। वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखते जो वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करूँ सांग सह सेयार करूँ। तेरे चलन जी आरंभ करवा आज वीडियो। तो सांग मैंने जमीक आपण मान समस्त पाखे गोटे इनफर्मेशन बर्तमान थी जे OTet 2022 सेकेंड जोटा को आ पूर्व आसला स्पेशल जोटा कि वर्तमान सेकेंड माने फ्रेश OTet जोटा भी कहीपर आम फ्रेश OTet नोटिफिकेशन आसी सारी जहाँकि 10 तारीख रु दैट मीन्स आसंता काली ठारू अप्लाई ऑनलाइन आरंभ हो। तो अप्लाई ऑनलाइन आरंभ करने पूर्वर आम जानिबा दरकार जे एक्चुअली कौन कौन सब दरकार होची कौन डॉक्यूमेंट दरकार केमिति अप्लाई करवा फी केते रहबो किंबा कौन कौन कोटी कोटी सब आमे फिलअप करवा। तो सही उपरे मोर ये वीडियो तेणु वीडियोटी को निश्चित रूप से शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी जदि भल लगे वीडियो को निश्चित रूप से सांग सह शेयर करंतु। तेबे प्रथम देखंतु आपण रजिस्ट्रेशन ओपन हबो केबे रजिस्ट्रेशन ओपन हबो जो 2022 अक्टोबर 10 तारीख सकाळ 8टा बेले सकाळ 8टा बेले आसंता काली 8टा बेले खोलीजिवो साइट को पर्यंत 19 अक्टोबर 2022 राति 12टा पर्यंत खोला रहबो बा राति 12टा पर्यंत ऑनलाइन आपण अप्लाई करि परिबे। किंतु जो फी ऑनलाइन फी पाई किछि एक्स्ट्रा डेट नाही जमीती कि आम देखी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम जो एसएससी टाइप रो एग्जाम रे आपनकर 2 दिन रहे पेमेंट पाई किंतु एठी 2 दिन नाही एठी कि 2 दिन कोन गोटे दिन भी नाही सही 11:45 राति सुधा 19 तारीख 11:45 सुधा आपण मानकु पेमेंट करबा को पड़िबो। जदि सेकेंड पाक को जीवा सेकेंड कौन रजिस्ट्रेशन कैन बी डन 24/7 माने आपण जेते बेले चाहिए सेते बेले अप्लाई करि परिबे दिन 2टार हो कि राति 2टार हो आपण जेते बेले चाहिए करि परिबे अप्लाई काहेकि जो साइट वेबसाइट www.bscodisha.ac.in ये आपनकर 24 घंटा आउ सप्ताह सारा माने 24/7 मीन्स 24 घंटा खोला रही अनवरत बंद रहिबो नाही 19 तारीख राति 12टा पर्यंत। तेणु 19 तारीख पर्यटन जातु नहीं मोर सजेसन आपण मैंने आसंता काली जदि बाहर ताले 2-4 दिन माने 15 तारीख भितर ही आपणकर काम सार दिंतु कहीं 19 तारीख पर्यटन हेले निश्चित रूप साइड स्लो रही पारे कि साइड जाम रही पारे तेणु आप 15 तारीख भितर काम सार दिंतु। Before going to registration, the candidates shall have to read the instruction, eligibility, applicability for appearing at the OTet 2022 second. He should be login only if eligible for OTet. जदि गोटे पिला अप्लाई कर जाउछंती ताले निश्चित रूप पूर्व थरे पढ़ी नियंतु पढ़िबार किछि आवश्यक नहीं आमे तो देखिले आपनकर जदि एलिजिबिलिटी ठीक अच्छी मु पूर्व वीडियो मोर अच्छी चैनल देखि परिबे एलिजिबिलिटी जदि आपनकर अच्छी ताले OTet अप्लाई करि परिबे। नेक्स्ट जदि कहबा on visiting the link given in the website follow the steps for OTet 2022 screen shall be displayed। तो जिते आम लिंक उपरे क्लिक करवा तो भितर आमको OTet 2022 देखा तो फॉलो द स्टेप्स आम स्टेप वाइज फिलअप कर चलवा। इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर तो प्रथम आमको रजिस्टर करने रजिस्टर कर सारा पर आम लॉगिन करके भितर आम अप्लाई कर न्यू रजिस्ट्रेशन करके भितर जाके अप्लाई कर। On clicking new registration OTet 2022 second page will be displayed on the screen where you have to enter your name, password, retype the password, enter mobile, email ID and then submit। ये होची न्यू रजिस्ट्रेशन आपन करिया कहले प्रथमे कोन करिया पड़ो ना देवा पड़ो गोटे पासवर्ड आपन निजे क्रिएट करिवे किंबा से पासवर्ड टाको कन्फर्म करेंगे तापर मोबाइल नंबर देवे जोटा कि परमानेंट मोबाइल नंबर आउ ईमेल आईडी जोटा कि आप यूज कर ईमेल आईडी देवे। हाँ ये भी लिखी देती एंटर योर ओन ईमेल आईडी एंड मोबाइल व्हिच यू आर वैलिड फेलिंग व्हिच यू कैन नॉट रजिस्टर ऑनलाइन ये दुटा आपंकर मस्ट दरकार। यू कैन यूज द सेम मोबाइल एंड ईमेल फॉर रजिस्ट्रेशन इन बोथ पेपर सेपरेटली आप पेपर 1 पेपर 2 अप्लाई करेंगे जो चाहिए ताले सही मोबाइल और सही ईमेल आईडी सेपरेटली आप अप्लाई करें। After clicking submit button you will be directed again to the login to your account
page where you have to enter your mobile number and password and click login again. ताने next जितला मारिबे आपण मोबाइल नंबर और पासवर्ड देला आपण लॉगिन करि परिबे. आफ्टर लॉगिन you have to enter OTP देबे आपण मोबाइल नंबर को जोटा रजिस्टर मोबाइल नंबर को जोटा जायथिबो एंड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के दीटांग को आपण OTP जो OTP वेरीफाई करिके आपण एप्लीकेशन को एंटर करि परिबे. एप्लीकेशन फॉर्म हैज फॉलोइंग 6 सेक्शंस. एप्लीकेशन फॉर्म रो 6टा सेक्शन अछि. हमें जानिछथि कोन जे प्रत्येक एप्लीकेशन जमती रहे प्रथम होची पर्सनल इनफॉरमेशन तापर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तापर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तापर निजर एड्रेस परमानेंट और टेम्पररी इनफॉरमेशन शीट पेमेंट एंड डिक्लेरेशन. तो ये 6टी को लेकिन ही आपणकर अप्लाई आपण करेंगे. ये 6टी सेक्शन ने आप अप्लाई करेंगे. प्रथम जो जमी अनुसार दे सेमती अनुसार प्रथम पर्सनल तापर एलिजिबिलिटी तापर एजुकेशनल तापर एड्रेस तापर इनफॉरमेशन तापर पेमेंट. तो यही अनुसार आप अप्लाई करेंगे. 4 सेक्शंस फ्रॉम द बिगिनिंग कैन बी फिल्ड ऑफ 1 by 1 स्टार्टिंग फ्रॉम A B C D. हाँ ताने 4 सेक्शन माने प्रथम A तापर B तापर C D अप्लाई करेंगे. हाउएवर आफ्टर रीचिंग द सेक्शन D one can again come back to C, B or A and update the information already entered. जदि आपनकर कोनोसी भूल वसत कोनोसी भूल करि नै चंती हां तबे आपण पछु को पुनि तरह आसी जे डी सेक्शन ने अछंती ताले डी सेक्शन रो पछु को आसी कि आपण एडा सब फिल अप करि परिए पुनि थरे. हां नेक्स्ट जदि जीवा नेक्स्ट कहूची आफ्टर करेक्टली एंटरिंग द ऑल रिक्वायर्ड 4 सेक्शन क्लिक ऑन इन्फॉर्मेशन शीट सो दैट whatever your data entered by you can be displayed on the screen along with your photograph. Take a printout of information sheet and check whether information entered by you 100% correct or not. जदि आपण एबे डी पर्यंत ठीक कर देइचंती तापर आपण चेक मारंतु. चेक मारले आपण इन्फॉर्मेशन शीट आसीजो देखंतु 100% ठीक नै कि आपण आउ थरे रीवेरीफाई करनियंतु. इफ समवन एंटर्ड some information entered by you is still wrong, you can very well correct the same logging into your accounts. Especially please check the language subject of for both the papers and optional paper for paper 2. However, this is the last chance you are being given this time to correct your data. तो आपन जदि थरिए से इन्फॉर्मेशन शीट देखि नेले आपनकर भूल होइछि तापर लास्ट चांस आपनको जे आपन चेक करिया पई तापर आपनको आसीजो फाइनल सबमिट पर आउ चेक हे परिबो नै आउ करेक्शन करि परिबे नहीं. प्री एंड पोस्ट एग्जामिनेशन प्रोसेसिंग विल बी डन एज पर डाटा इन्फॉर्मेशन सबमिटेड. प्री आउ पोस्ट एग्जामिनेशन एग्जाम पूर्व आउ परे डाटा प्रोसेसिंग आपन जहाँ जहाँ देबे से अनुसार ही हबो. फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म पर्सनल इन्फॉर्मेशन शैल बी एंटर्ड by the candidate at first. तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रथम आपको दବାକୁ पड़ो. एंटर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स अपलोड द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट फोटोज रहिबो जेपीजी बा जेपीजी किंबा पीएनजी किंबा जेपीजी एई फॉर्मेट रहिबो. देयर आफ्टर सबमिट बटन टू गो टू द नेक्स्ट स्टेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. एंटर ऑल द रिक्वायर्ड फील्ड्स अंडर एलिजिबिलिटी एंड सबमिट द नेक्स्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. देन जदि कहबा candidates can appear both paper 1 paper 2. हाँ बढ़िया कथा कहला कौन कैंडिडेट्स कैन अपियर पेपर 1 पेपर 2 और बोथ पेपर्स एज पर देयर एलिजिबिलिटी. द कैंडिडेट्स अपियरिंग बोथ पेपर 1 पेपर शैल हैव टू फिल अप एप्लीकेशन सेपरेटली. आप जदि दीटा चाहते सेपरेट दीटा एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे. एंटर ऑल द मैंडेटरी फील्ड्स अंडर जनरल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस एंड सबमिट टू गो टू द नेक्स्ट होची एड्रेस होची परमानेंट किंबा कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस दवाक पड़ी आपको. इट इज टू बी नोटेड दैट द सर्टिफिकेट्स ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्रिंटेड एज पर डिस्ट्रिक्ट मेंशनड इन द परमानेंट एड्रेस and shall be sent through the correspondent address entered by the application. आपण जदि correspondent address किछि रखिछन्ती बा temporary address किछि रखिछन्ती सेठी कि आपनकर जहाँ भी पठेबे सेठी कि जिवो किंतु permanent address आपनकर मेंशन करिया को पड़िबो. तापर कहूँ प्रिंट द इन्फॉर्मेशन शीट डाउनलोड करके बाहर कर नियंतु. तापर आसी जीवो नेक्स्ट होची पेमेंट ऑप्शन पेमेंट एंड डिक्लेरेशन लास्ट सभा लास्ट रही सभा शेष रही. आफ्टर क्लिकिंग येस फाइनल सबमिट द डिक्लेरेशन एंड द पेमेंट पेज नो इन्फॉर्मेशन कैन बी एडिटेड. आउ इन्फॉर्मेशन जब थरे पेमेंट होला पर आउ एडिट करि परिबिनी कोनोसी जिंस. ओडिशा कैन नॉट बीएससी ओडिशा कैन नॉट and is not authorized to correct the information when it has been uploaded by the candidate himself or herself
hence BSc Odisha shall not be requested for any modification. The result of the OTet shall be processed as per data entered by the candidate and there shall be no deviation from that. जहाँ आप ऑनलाइन में फिलअप करेंगे से ही आप शो कर कौन आपण सर्टिफिकेट हो कि आपको रिजल्ट सीट रे. पेमेंट कैन बी मेड ऑल्सो थ्रू ऑनलाइन मोड विथ HDFC पेमेंट गेट अवे. ऑनलाइन मोड में आप भी HDFC पेमेंट गेटवे रे पेमेंट करेंगे. It is advised to complete the process filling of application form and deposit fill well advance and do not wait the last date. मुझे जोटा कही फास्ट देखो से कौन डू नॉट वेट टिल द लास्ट डेट कहीं आपणकर लास्ट डेट पर्यंत साइड जाम हो जाए जो कि साइड से वर्क करे नहीं प्रॉपर्ली. सो आप जहाँ करेंगे 15 तारीख भितर कर. इन केस पेमेंट इज नॉट ऑथेंटिकेटेड टिल द शेड्यूल डेट यू विल नॉट बी एलिजिबल. जदि आप पेमेंट है तो आप एलिजिबल नुहति. तो ये थिला टोटाल आपणकर एप्लिकेशन फी बाबद आउ गोटे जिनस मेन जिनस कौन आपणकर पेमेंट फी केते रहबो. गोटे क्वेश्चन अच्छी आमर पेमेंट फी केते रहबो. तो मन रखि थांतु SC ST कैंडिडेट को पाई पेमेंट होची 400 टंका पर पेपर आउ बोथ कैंडिडेट पे 600 टंका पर पेपर. जो अलग कैटेगरी रहे SC ST कैटेगरी केवल रहे 400 आउ अदर कैटेगरी जो मान रहे SC 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 BC OBC जनरल एम सब 600 टंका देखिए आपणकर फॉर्म फिलअप करेंगे. तो ये थिला आपणकर टोटाल डाटा. आउ कौन कही आउ गोटे जिनस जानी नियंतु. द कैंडिडेट शाल हैव टू अपियर द एग्जामिनेशन एट डेजिग्नेटेड एग्जामिनेशन सेंटर. द कैंडिडेट शाल हैव टू अपियर एट एनी सेंटर एनी सेंटर सिलेक्टेड एट रैंडम बाय बोर्ड. ये जो आपणकर ओटेट सेंटर आपन को देते हम ना आपन को दवापाई हम ना कहीं आपणकर कि कौन हस्तक्षेप करार ना कहीं बोर्ड जो आपको दब से आप अप्लाई सॉरी से परीक्षा देवे. आशा करुँची अप्लाई करने पूर्व निश्चित रूपे गोटे डाटा पाई गोटे प्रॉपर डाटा पाई. जदि वीडियोटी भल लगी था निश्चित रूप वीडियो को लाइक करेंगे सांग शेयर करेंगे. आउ जदि चैनल को नुआ कर निश्चित रूपे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाई ऑल क्लिक करूँ. एमती किसी नुआ नुआ नोटिफिकेशन निज मोबाइल प्रथम पाइबा भेट हवा आउ गोटे वीडियो से पर्यंत विदाय दिंतु. जय जगन्नाथ.